Hi, good evening everyone. This is Shefali Singla, and in this session we are going to discuss few questions from trees. So ये questions वो हैं जो 2022 और 21 वाले एग्जाम में पूछे गए थे. So for each question we will be having like 1 minute to discuss the problem statement and to understand the question, and फिर आप उसमें आंसर रिटर्न आप आंसर दोगे. Okay, and then I'll be discussing the concept. So I hope there was no issue in the audio and the video. Sab sahi hai. So let's move on to the first question. This question is based on avial trees. So you are supposed to return the number of rotations required. तो आपको कुछ elements दिए हुए हैं. इन elements से आपको avial tree construct करना है, and then you have to return the number of rotations. So just give it a try. So directly it is asking that how many rotations are required during the construction of an avial tree if the following elements are to be added in the given sequence. So anyone having any idea what is avial tree? What is the difference between avial tree and binary search tree? Very good evening, Shubham. Good evening, Anjali. What is an avial tree? So basically, avial tree is nothing but this is balanced binary search tree. Balanced बाइनरी सर्च ट्री. कल वाले सेशन में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी. बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? जिसमें लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स स्मॉलर होते हैं रूट से एंड राइट सब ट्री एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन रूट. सो हियर द ओनली प्रॉब्लम विद द बाइनरी सर्च ट्री इज वर्स्ट केस में आपके पास लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड ट्री बन जाता है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n. बट अगर आप बैलेंसिंग फैक्टर अप्लाई करते हो, then in that case the time complexity will be reduced to log n. So that is the main idea behind the concept of avial trees, that is balanced binary search tree. Otherwise जब आप element add करते हो, simply you have to compare the element with the root element. If it's smaller, go to the left side. If it's greater, go to the right side. Okay, so first element is 35. So let's take 35 here. 35 पहला element है, तो definitely this will be the root element. Now take the next element, that is 50. Compare 50 with the root. 50 is greater than 35, so we'll be going to the right side. 50 will be added to the right side. Balancing factor क्या रहेगा? Balancing factor होता है height of left subtree minus height of right subtree. So here this is the leaf node. Obviously बात है कि leaf node के लिए कोई left subtree और right subtree नहीं है, so balancing factor will be 0. For 35, balancing factor is 0 minus 1, so that is minus 1. And we know that कि height में difference 1 का आ सकता है. That means allowed values for balancing factor are plus 0, 0, plus 1, 0 or minus 1. Okay. Now, this is balance क्योंकि जो आपके पास balancing factor आ रहा है वो valid balancing factor आ रहा है. इन तीनों में से कोई भी value आ सकती है. Maximum height difference as discussed 1 हो सकता है. So here this is minus 1, so it is allowed. So let's go to the next element. Next element is 40. उसी binary search tree में जैसे element add करते हैं, 40 is greater than 35, go to right side. 40 is smaller than 50, so we'll be adding this to left side. Again calculate the balancing factors. Balancing factor here is 0. For 50, height of left subtree is 1. Height of right subtree is right side पे कुछ नहीं है, this is 0, so it is allowed. Check for 35. For 35, okay. For 35, height of left subtree is 0. Left side पे कुछ नहीं है, अब right side पे height कितनी होगी? This is 1 and 2, so height is 2. This comes out to be minus 2. Minus 2 is not allowed, so this means that this tree is not balanced. ये balanced नहीं है. तो इस केस में हम क्या करेंगे? We need to cover, in this case we need to find out कि कौन सी साइड overweighted है, प्रॉब्लम किस साइड से आ रही है. प्रॉब्लमेटिक नोड कौन सी है? 35. प्रॉब्लमेटिक नोड is 35.
35 की कौन सी साइड से प्रॉब्लम आ रही है? द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम 35 के राइट के लेफ्ट से, करेक्ट? दैट मीन्स ऑन at the time of insertion, here this is right to left rotation, right to left problem, RL problem, right? What is the solution for RL problem? मैम ये क्लास से मेरा पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर कवर हो जाएगा क्या? विक्रम, काफी हद तक हो जाएगा, 100% तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपको इन सेशन से. Alright, so if it's an RL problem, if it's a RL problem, then what do we need to perform here? Do you have an idea about avial trees? तो कोई एक पर्टिकुलर साइड नहीं है. अगर पूरी लेफ्ट साइड ओवरवेटेड होती तो राइट साइड पे एडजस्ट करते, राइट साइड ओवरवेटेड होती तो लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करते. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ RL, राइट एंड लेफ्ट. सो दैट मीन्स इस प्रॉब्लम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ईदर टू RR और LL. LL में कन्वर्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास R ऑलरेडी प्रेजेंट है. So this means that we can convert this problem to RR problem. कैसे रोटेशंस कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहली रोटेशन हम अप्लाई करते हैं ऑन द चाइल्ड ऑफ प्रॉब्लमेटिक नोड. प्रॉब्लम कौन सी नोड को आ रही है? 35. चाइल्ड ऑफ 35 इज 50. सो व्हाट आई विल डू इज हियर आई विल अप्लाई द राइट रोटेशन. दैट मीन्स इसको ऐसे एज्यूम कीजिए, लेट अस एज्यूम दिस इज द edge. I hope you can see this. So this side is representing 50 and this side is representing 40. तो अगर मैं इस side को पकड़ के pull कर दूं, then what will happen? 40 will come up. 40 will come up. Here will be getting 35. यहाँ पे पकड़ के आपने इसको pull किया, so here will get 40 and here will get 50. दोबारा से बैलेंसिंग फैक्टर चेक नहीं करना क्योंकि अभी हम जो प्रॉब्लम आई थी उसके सॉल्यूशन के मिडल में. So what I have done is I have applied a right rotation. Okay. Now if you see this problem is converted to RR problem. अगर right side पे problem है तो इसका मतलब left side पे elements कम है. So we need to pull this, we need to apply one left rotation ताकि लेफ्ट साइड पे कुछ एलिमेंट्स आ जाएं. अब जो फाइनल रोटेशन होती है वो हमेशा और हमेशा प्रॉब्लमेटिक नोड पे होती है. इफ LL प्रॉब्लम इज देयर, RR प्रॉब्लम इज देयर, ओनली वन रोटेशन इज रिक्वायर्ड और वो रोटेशन डायरेक्टली प्रॉब्लमेटिक नोड पे होती है. इफ RL प्रॉब्लम और LR प्रॉब्लम इज देयर तो जो फर्स्ट रोटेशन होती है दैट इज ऑन द चाइल्ड ऑफ प्रॉब्लमेटिक नोड एंड सेकेंड रोटेशन विल बी ऑन द प्रॉब्लमेटिक नोड इटसेल्फ. So 35 was the problematic node. Here I am going to apply left rotation. Then what will happen? जब 35 को pull किया 40 will come in the middle, 35 and here we have 50. अब आप देख सकते हो ये जो resultant tree आया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, this is a binary search tree and इसमें जो ट्री में nodes हैं these are balanced. Okay. Very good evening Amit. Make 40 to root. 40 root नहीं बनेगा but definitely 50 और 40 में से 40 will be the parent of 50. So this is the solution of RL problem. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर RL problem है तो पहली रोटेशन कौन सी है? R means right. So first rotation is the right rotation. Second rotation is the left rotation. Okay. Now this is balanced. Now we'll be following the same steps for all the remaining elements. Now take 25, add 25. 25 is smaller than 40, go to left side. 25 is smaller than 35, go to left side. Calculate the balancing factors. For leaf node, it is 0. For 35, it is 1 minus 0, no problem. And for 40, height of left subtree is 2, height of right subtree is 1. So it is 2 minus 1, that is 1. कोई problem नहीं आई. Allowed balancing factors आए. Go to the next element, 30. 30 is
Smaller than 40, 30 is smaller than 35, 30 is greater than 25. Now calculate the balancing factors. किसी नोड पे प्रॉब्लम आ रही है, just let me know if there is any problem on any node. मैम कौन सा टॉपिक करवा रही हैं आप? विक्रम, आपने देखा होगा इट्स कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस. मैंने आज वाले सेशन में कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ फ्रॉम ट्रीज. ओके, एक और सेशन आएगा कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस के ऊपर, एंड आफ्टर दैट आई विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स. स्टार्टिंग में 35 नोड पर -1 -2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली ये जो हम -1 -2 ये कुछ नहीं होता, दिस इज द बैलेंसिंग फैक्टर. बैलेंसिंग, और यू कैन सिंपली से बैलेंस फैक्टर. बैलेंस फैक्टर ये बताता है कि आपका ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है. बैलेंस फैक्टर इज नथिंग बट दिस इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ right subtree. Okay, so this is height of left subtree minus height of right subtree. अगर आप mod यूज करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि allowed balancing factor is 0 और 1. अगर आप mod यूज नहीं करते हो then that is +1, 0 और -1. कहने का मतलब ये है कि बैलेंस फैक्टर जो है ट्री की हाइट में ज्यादा से ज्यादा एक ही हाइट का डिफरेंस हो सकता है, एक ही लेवल का डिफरेंस हो सकता है. ओके okay? यहां तक कोई डाउट? अब सेम कॉन्सेप्ट हम बाकी एलिमेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं. आई आस्क्ड दैट नाउ व्हिच प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लमेटिक नोड? 35. 35 पे अब हम कैलकुलेट करेंगे. सो ऑन 35 लेट्स कैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर्स. मैं पहले वाले बैलेंसिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देती हूँ. We'll always start calculating the balancing factors from the leaf node. So this is 0, this is 0. Now for 25 height of left subtree में left subtree exist ही नहीं कर रहा, तो height of left subtree is 0. height of right subtree में आपके पास height कितनी है? This is 1. So it comes out to be -1. ये allowed balancing factor है, कोई problem नहीं. Now let's calculate for 35. 35 के लिए what is the height of left subtree? Left subtree की तरफ देखिए, path length, maximum path length कितनी है? This is 1 and 2. So it comes out to be 2. Height of right subtree missing है, so this is 0. So it comes out to be 2. 2 is not allowed. Problem कौन सी साइड से आई? Time for YouTube classes is 6:30 p.m. But today, due to the technical reason, we started the session at 6:45, but it is 6:30 p.m. Now, problem is coming from which side? Problem is coming from 35. Problematic node है. 35 की कौन सी side से problem आ रही है? It is left and then right. That means on insertion of 30, we are getting LR problem. क्वेश्चन में बेटा आपसे नंबर ऑफ रोटेशंस भी पूछी जा सकती हैं और टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है. कितनी एलआर प्रॉब्लम्स आई, कितनी आरएल प्रॉब्लम्स आई, कितनी एलएल प्रॉब्लम्स आई, कितनी आरआर प्रॉब्लम्स आई. सो दे मे आस्क a question on the basis of the number of different types of problems which occur during adding the elements in the ABL tree. Okay, so LR problem का solution क्या है? Again LR है या RL है, we need to apply two rotations. पहली rotation आएगी on the child of the problematic node. So here we'll be applying the left rotation. LR है तो पहली rotation होगी left rotation किसके ऊपर? On the child of problematic node. So we'll apply here left rotation. तो जब left rotation apply की 30 will come up. So I'm applying here left rotation. So this comes out to be 40. Then we have 35. Right subtree में there will be no change. जब आपने यहाँ पे left rotation apply की, pull करके देखो, so here we'll get 30 and 25. दोबारा से balancing factors calculate नहीं करने क्योंकि अभी हम LR problem को पूरा solve नहीं कर पाए हैं because two rotations needs to be applied. We have just applied one rotation.
After applying the left rotation, LR problem है, second rotation will be the right rotation. ये final rotation है, तो ये apply होगी on the problematic node. Problematic node 35 थी, so 35 के ऊपर will apply a right rotation. Right rotation. अब ये right rotation apply करने के बाद will be getting, obviously 40 will be the root. Here will be having 30, 35, 25, and here we have 50. Now the tree is balanced. Take next element, 60. 60 is greater than 40, 60 is greater than 50, so we'll be adding here. Calculate the balancing factors. Tree is balanced, height में कोई difference नहीं आ रहा. Then is 78. 78 is greater than 40, 50, 60, so it will be on the right side of 60, 78. Check for the balancing factors. Check for the balancing factors. Here the balancing factor is 0. Balancing factor is 0 minus 1. It is minus 1. 0 minus 2. Height of right subtree is 2. So this is minus 2. Problem आ गई. अब क्वेश्चन ये होगा मैम आपने लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं पहले बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट किए. सी व्हेन आई एम एडिंग एन एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फैक्टर कौन सी साइड पे चेंज होगा, राइट साइड पे. तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. जिस सब ट्री में आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो उस सब ट्री पे फोकस कीजिए. ओके, नाउ चेक फॉर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम. कौन सी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम राइट, राइट के भी राइट साइड से. दैट मीन्स राइट साइड ओवरवेटेड है. अगर राइट साइड ओवरवेटेड है तो हमें कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट पे चाहिए. प्रॉब्लम कौन सी नोड पे आई, 50 पे. सो आई अप्लाई वन लेफ्ट रोटेशन. आई अप्लाई वन लेफ्ट रोटेशन ऑन 50. लेफ्ट रोटेशन. सो लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 60 विल कम अप, इट विल बी 40, 30. यहाँ पे चेंजेस आए हैं 60, 50 and 78. Here we'll be having 25 and 35. So now tree is balanced. Similarly, add the remaining elements. We are left with two more elements. 20. 20 is smaller than 40, 20 is smaller than 30, 20 is smaller than 25. So it will be added to the left of 20. Calculate the balancing factors. It's not creating any problem. आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ट्री यहाँ तक आपके पास फुल बाइनरी ट्री है, तो जब आप नेक्स्ट नोड ऐड करोगे तो मैक्सिमम हाइट डिफरेंस 1 आएगा. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट एलिमेंट इज 28. 28 इज smaller than 40, 28 is smaller than 30. Left side 28 is greater than 25, so we'll be adding this on the right side. Again, there is no problem. क्योंकि आपको बैलेंसिंग फैक्टर के लिए क्या करना है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट सब ट्री. लीफ नोड्स के लिए श्योरली इट विल बी 0. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1, राइट सब ट्री की हाइट भी 1 है. 1 minus 1 is 0. नो प्रॉब्लम. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री फॉर 30. हमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट नहीं करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ नोड्स में कंफ्यूज होते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स, वी आर सपोज टू कैलकुलेट द हाइट. हाइट मीन्स किसी भी लीफ नोड के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है. आप 30 से 20 पे जाओ या 30 से 28 पे जाओ, एनी हाउ द पाथ लेंथ इज 2. सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 2. हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 1. So it is 1 allowed. Height of left subtree is 1. Height of right subtree is 1. So it is 0. For 40, same. Height of left subtree is 3. Height of right subtree is 2. So it comes out to be 1. तो किसी भी नोट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. So we'll stop here. On addition of 78, we got RR problem. अगर आपसे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पूछी जाती हैं तो हमारे पास एक RL प्रॉब्लम आई है, एक LR प्रॉब्लम आई है, एंड वी गॉट RR प्रॉब्लम.
एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर द रोटेशंस, आप यहां से रोटेशंस काउंट कर सकते हो. कितनी राइट रोटेशंस हैं? 1 राइट रोटेशन, second right rotation, 2 right rotations, and if we count left rotations, 1, 2 and 3 left rotations. So 3 left rotations and 2 right rotations. Answer is C. इनफैक्ट आपको यहाँ से रोटेशंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है. जब आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू नीड नॉट टू अप्लाई, यू नीड नॉट टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना है. वी नीड टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एज वेल. तो फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स. और हमें मालूम है कि आरएल रोटेशन, आरएल के लिए 1 right and 1 left rotation is required, 1 left and 1 right rotation is required. तो अभी तक 2 left 2 right हो गई. RR means right side overweighted है, so left rotation is required. तो यानी कि 3 left rotations and 2 right rotations. Rest it's up to you. आप सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके नंबर ऑफ रोटेशंस रिटर्न कर रहे हो या पूरा सॉल्यूशन करके नंबर ऑफ रोटेशंस रिटर्न कर रहे हो. This depends on your practice. Okay. Anyhow, in the next week, next to next week, I'll be taking 5 sessions on the concepts of trees. एक session dedicated होगा binary tree के ऊपर. Next session will be dedicated on binary search tree. The next session will be dedicated for tree traversals. Very, very important. Next question is from tree traversals only, and binary tree construction. And then the next session will be on avial trees. So avial tree में I'll take the example and will identify all the types of problem. जिन भी students को avial tree में problem है, next week I'll be coming up with the concept of avial tree. अभी जो session है, this is concept through questions. उसमें हम पूरा मतलब जब हम concept करते हैं ना बच्चे, तो हम बिल्कुल basic से start करते हैं. So I'll be discussing that from basic. तो जिन लोगों को थोड़ा difficult लग रहा है, you need not to worry about that. ये इजी लग रहा होगा उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी एग्जाम लिख चुके हैं. कुछ कुछ डाउट्स हैं कॉन्सेप्ट्स में, कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हैं, बट डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप सबके लिए होंगे, ताकि आप बेसिक से, आप स्क्रैच से उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर पाओ. ओके, ऑलराइट. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, कंसिडर द ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री. आपको 3 ट्रेवर्सल्स दिए हुए हैं. वी आर गिवन विद द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड इन ऑर्डर. Which of the following is the correct post-order traversal? अब जब हम post-order traversal की बात करते हैं, तो इसका मतलब हमें कुछ तो trick चाहिए, right? I'll share the trick with you guys. How to quickly write the pre-order, in-order and post-order. जो standard approach होती है वो तो है ही है हमारे पास. Apart from that, there is a trick using which you can write the post-order traversal in 10 seconds. Okay? So first of all, pre-order means अगर हम ट्री की बात करते हैं तो मेजरली देयर आर 3 components like the root, left subtree and right subtree. Pre-order, in-order और post-order, ये जो नाम है, these are based on the position of the root node. लेफ्ट सबट्री और राइट सबट्री का ऑर्डर चेंज नहीं होता. पहले आप लेफ्ट सबट्री के एलिमेंट्स को विजिट करते हो, देन वी विजिट द एलिमेंट्स ऑफ द राइट सबट्री. सो हियर प्री मीन्स पहले, दैट मीन्स रूट विल बी विजिटेड बिफोर left subtree and right subtree. Then we have in order. In order means a root will be visited in between the subtrees, यानी कि आपके पास left subtree और right subtree के बीच में root आ रहे हैं. तो इसका मतलब in order क्या बताएगा कि रूट के लेफ्ट सबट्री के एलिमेंट्स कौन से हैं और रूट के राइट सबट्री के एलिमेंट्स कौन से. सो इन ऑर्डर. एंड फाइनली वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री. जब बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया, देन इजीली वी कैन रिटर्न द पोस्ट ऑर्डर. सो प्री ऑर्डर में जो भी पहला एलिमेंट होगा, श्योरली दैट विल बी द रूट. जब आपने रूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया, आप श्योर हो कि यही रूट है, फिर आप लेफ्ट सबट्री और राइट सबट्री के एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्री ऑर्डर, सबसे पहले आपके पास क्या रहे, ए. दैट मीन्स ए विल बी द रूट फॉर द ट्री. रूट. आफ्टर दैट हम इन ऑर्डर चेक करेंगे कि अब ए के लेफ्ट सबट्री में कौन से एलिमेंट्स होंगे और ए के राइट सबट्री में कौन से एलिमेंट्स होंगे. सो विल गो टू द इन ऑर्डर. ए के राइट सबट्री में राइट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, यानी कि ए का राइट सबट्री विल बी कंप्लीटली एम्प्टी.
all the elements will be a part of left subtree. Out of these elements, now B is coming first. That means left subtree में B will be the root node. अब check कीजिए in order में this element is already handled. B is here. B के left side पे जो भी elements होंगे, these will be the elements of left subtree of B. I should start writing from here. We got A here, then we got B. B के left side में we are getting 5 elements E, I, C, F, J. E, I, C, F, J. ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन. कोई भी एग्जाम है, फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर डेटा स्ट्रक्चर्स और ट्रीज आपके सिलेबस में है तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप बन सकता है. देन रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज G, D, K, H, L. Now, out of these 5 elements, E, I, C, F, J, ये भी हैंडल हो गया, ये भी हैंडल हो गया. C is coming first. That means C will be the root node. अब देखिए C के लेफ्ट पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं. C के लेफ्ट में वी हैव E, I. C के लेफ्ट में आपके पास E, I आ रहा है एंड C के राइट में वी आर गेटिंग F, J. अगेन आउट ऑफ E, I, E is coming first, यानी कि E रूट होगा. I कौन सी साइड पे? E के राइट हैंड साइड पे. सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ राइट सबट्री. Similarly, E is over, I is over. Next is F. F, J में से F पहले आ रहा है, so F will be the root node. J is on the right hand side, so J will be in the right subtree. Are you getting this? तो हम क्या कर रहे हैं? प्री ऑर्डर से हम रूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इन ऑर्डर is going to distinguish between the elements of the left subtree and the right subtree. Now, let's go to the right subtree. In the right subtree, we have 5 elements, out of which D is coming first. That means D will be the root node. D के लेफ्ट में G आ रहा है और बाकी के 3 elements राइट साइड पे जा रहे हैं. So D के लेफ्ट में we have G and to the right we have 3 elements, that is K, H, L. Out of these 3 elements, K, H, L, H is coming first. That means H will be the root node. H के लेफ्ट में K आ रहा है, H के राइट में L आ रहा है. K and L. Let me clearly draw a tree here. So A is the root node according to the tree that we have obtained from the given pre-order and in-order. जो आपको pre-order और in-order दिया गया था, उसके basis पे हमारे पास जो tree बना है उसमें A is the root node, left subtree में B is the root node, right subtree of A is completely empty. B के left में C आया, then is E, then is I. Here we have F. Then on the right side we have J. B के right subtree में D is the root node. To the left of D we have G. To the right we have H, K and L. This is the tree. बाइनरी ट्री बन गया. अब सिंपली आपको इसके ऊपर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाना है. चाहे तो आप स्टैंडर्ड अप्रोच अप्लाई कर लीजिए. पोस्ट मीन्स रूट विल बी विजिटेड आफ्टर द सब ट्री. सो लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड देन रूट. आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. रूट एंड पे आएगा. रूट ऑफ अ ट्री इज ए, यानी कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल विल बी ए. यहाँ पे ई आ रहा है, सो बी कैन नेवर बी द आंसर, सी कैन नेवर बी द आंसर. Okay, then left subtree. So now it's better to find out. आपने दो options eliminate कर दिए, 50-50 वाला पोल अप्लाई हो गया. Now अब आपके आंसर गलत होने के चांसेस कम हो गए. तो एलिमिनेशन मेथड पे भी हमें साथ साथ में वर्क करना होता है, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंटली और जल्दी से आंसर मिल जाता है. Now instead of using the standard approach, I'll be using the short trick to return the post order.
तो पोस्ट ऑर्डर की ट्रिक क्या होती है कि जो भी आपके पास लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड है, एवरी टाइम वी विल बी राइटिंग द लीफ नोड. हमें हमेशा क्या लिखना है? लीफ नोड लिखना है. लीफ नोड को डिलीट करना है. लीफ नोड तो बहुत सारी है. कौन सी वाली लीफ नोड? लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड. लेफ्ट मोस्ट पे क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स आर विजिटेड बिफोर द राइट सब ट्री एलिमेंट्स, इसलिए हम लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड पे फोकस कर रहे हैं. लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल लीफ नोड्स आर आई, जे, जी, के, एल, और इनमें से लेफ्ट मोस्ट साइड पे आ रही है आई. दैट मीन्स पोस्ट ऑर्डर में पहला एलिमेंट क्या होगा आपके पास? इट विल बी आई. खत्म. पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ओनली वन ऑप्शन इज देयर. ओके. If you want to find this, जब आप I को delete करोगे, next leaf node will be E, leftmost leaf node. E को delete करोगे, C का right child है, so C is not the leaf node. It's an internal node. So we'll go to the next leaf node available, leftmost leaf node J, then F, then C. So like this, using this trick, आपको जो 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स का टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्री कंस्ट्रक्ट करने में लगेगा. पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर रिटर्न करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, because using a trick we can return that in 10 seconds. So I'll be sharing all the tricks for pre-order, in-order, post-order. ट्रिक्स हैं, बहुत मजेदार ट्रिक्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. I'll take one session on ट्री ट्रेवर्सल्स. तो ट्री ट्रेवर्सल्स वाले सेशन में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी. स्टैंडर्ड मेथड भी डिस्कस करेंगे एंड शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे. ओके. Anyone having any doubt? So answer for this question is clearly it's option D. I guess there is no doubt. So we have discussed two questions, but I guess questions तो easy थे. Questions को हम 5 minutes में cover कर सकते थे, but time किस में गया? Concepts में. और एजेंडा इस सेशंस का यही है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो यूजिंग ट्रिक्स. Okay. So in the next session, we'll continue our discussion with concepts through questions. We'll continue our discussion with concept through questions. If any one of you is having any doubt, please feel free to write in the chat section. ये जो भी मैं पीपीटी यूज कर रही हूँ और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है, व्हाटएवर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, एक तो आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, बट बेटर आइडिया इज कि आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए. जो ये पीपीटी है विद इंक आपको मिल जाएगी. कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में. टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And to get more videos like this, more videos on concepts through questions, more videos on important concepts, for that subscribe the channel, like the video, and if you have any doubts or concerns, तो आप telegram group में भी share कर सकते हो, or you can write in the chat section. Okay. Thank you so much guys for joining the session. This is all about the session. God bless you. Bye bye.